बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हालत सना? ठीक ठाक हो? उम्मीद करना है कि ठीक ठाक हो। सो तो अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ ईमान चोसो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हाँ जी, खैरी मेरी हाँ। अज जनाब एक नवे दिहाड़े नाल नवी तारीख नाल फिर हाज़र हाँ जनाब। तारीख हुई गई ने अज 23 दिहाड़ा हो गया ने अज जुमा। सब से पहले सारे की माड़ी तरफ जुमे की मुबारक जी। अल्लाह ताला सारे वास्ते रहमत वाला जुमा आना है, सारे वास्ते अपनी रहमत बरसान जी अल्लाह ताला। जुलिया निक्कियां की छोड़ने वास्ते यानी 8 हो गए। उसके बाद तक दिहाड़ी क्या होना, जहाज उपर आई गया। हाँ जी व्यूअर, निक्कियां की छोड़ी तो मुड़े आया स्कूल जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह तगड़े होने जाने बने बने जनाब। अज मौसम भी बड़ा सोहना है। जुम्मे ना दिहाड़ा तो अज कोई चढ़ नज़र नहीं आई रहा, साफ सुथरा मौसम होया वा। टैंपरेचर अज फिलहाल तो 13 पर है, तो 19 पर जासी ने अज दिहाड़ी 19 तक आने जासी, यानी 19 तक फिर वापस हो जासी। क्या होना, चलो दिहाड़ी तक अज एक माड़ा पत्री आ वापस आई रहा जी पाकिस्तान को। उन्होंने भी जा सी कोई 7:45 हम ले गए सन। डैड इसको गया वो चाने वास्ते तकड़िया ने, यानी पापा गए वो सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी व्यूअर, जुमे का टाइम हो गया। एक बार फिर सारे की जुमे की मुबारक जी। अच्छो जुलना जुमा पढ़ने वास्ते मैं तो जुलिया ने तुसा कि नाल दसना है जी। उत्थे अज शहीद दसन जी इंशाल्लाह शहीद जुलिया। तो मौसम चंगा है जी, टैंपरेचर 19 पर सही गया यानी है। चढ़ पे हुए थे, टैंपरेचर सही है। हवा भी चल रही थोड़ी थोड़ी, हवा शवा ठीक है। हाँ जी वीवर पहुँची हैं मस्जिद। अज साढ़े लाला यासीन और पता नहीं किधर गए। अज कौन इतना डाइया ने चटाइया अज बाकी बंदे आए अंदर बड़ी गए उस पास अंदर गया उस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यूटी शुरू होगी? ड्यूटी शुरू माशाल्लाह ठीक है। लाला इधर निकले तक अंदर। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى Praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the sustainer, the provider of the entire universe and whatever it contains.
endless peace, blessings, salutations upon our final prophet, our master, our guide, our role model, none other than Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and his family and his companions and those who follow him. It is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that once again on this beautiful and blessed day of Jum'atul Mubarak, Allah subhanahu wa ta'ala allowed us that we come into his house and that we worship him. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that he accepts our prayers and the prayers of all of those across the world, insha'Allah. Ameen. I've had the honor of reciting the ayah from Surah Safat, telling us about the great sacrifice of Prophet Ibrahim alayhi salam. After praying for many years, Ibrahim alayhi salam was bestowed and blessed with a child. And that child was a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet Ismail alayhi salam. And then Ibrahim alayhi salam was commanded. In Tafsir of Nurul Ma'ani, we find that around the age of 13, Ibrahim alayhi salam, when Ismail alayhi salam is the age of 13, he sees a dream. 3 consecutive nights, 3 nights in a row, he sees that he is sacrificing his beloved son Ismail alayhi salam. The dream of prophets, it is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibrahim alayhi salam, after seeing it on the 3rd night, they sat down their child Ismail alayhi salam, and they said, "Oh my son," and these are the words of the Quranul Kareem, "I have seen a dream where I am sacrificing you. मैं आपको ज़बा कर रहा हूँ. आपका क्या ख्याल है? What are your thoughts?" And Ismail alayhi salam was a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And he was an obedient son. And he said, "Ya abati fa'al ma tu'mar." "Oh my father, do as you have been commanded. जैसा आपने देखा है वैसा आप करें. सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन." You will find me, insha'Allah, from amongst the patient. And the half term has started for many children. And it is very important that I mention here as well. Being obedient to our parents. If that happened in this day and age, where our parents or someone said that, if our father said that to us, immediately we would start answering our parents back. And we would say to our father, "You are not well. We will make arrangement for you to see the psychiatrist and the doctor." But this was Ismail alayhi salam. This was an obedient son. At that age, he says to his father, "Oh my father, do as you have been commanded." Imagine after years of praying for your child, praying to have a child, and then you are being told that sacrifice. We have accepted your devotion, O Ibrahim alayhi salam. Salamun ala Ibrahim. Peace be upon Ibrahim alayhi salam for this great act of devotion. And Allah subhanahu wa ta'ala, after Ibrahim alayhi salam sharpens the knife again, he sends Jibreel in an instant with a ram from Jannah. And Ismail alayhi salam stood next to Ibrahim alayhi salam, and the ram from Jannah has been sacrificed. And this sacrifice was so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala that he has commanded me and you, each and every individual,
And us, alhamdulillah, in this country, we are fortunate that I cannot think of anyone who says they cannot afford to do the Qurban. We can all afford that. 250 to 300 pounds if you convert the rate. If we have about that threshold, Qurbani is wajib upon each and every individual. And we know many places around the world, wherever you know, Pakistan, India, Bangladesh, wherever it may be, Palestine, wherever it is, you should try and perform that Qurban. It is wajib and a duty upon you to perform that Qurban. And it is one small animal, it is for one individual. The sheep, it is one individual. And the large animal, the cow, the camel, it has 7 individuals that can participate and partake in that one animal. And this will be the Qurbani for those 7 individuals. And we can do that Qurbani upon the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We can do that for our family members that have passed away. Then Allah subhanahu wa ta'ala, whoever will eat that meat, they will also get the reward for that. So especially in a time now, where we know places and we know people. You know, when we were younger, we used to hear that people wait for Qurbani to come, for this time to come, where they can eat red meat, where they can enjoy eating meat. Even today in 2025, you believe it or not, it is reality. Ya haqiqatan. There are people waiting for people to do their Qurbani so they can eat meat. And Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, is so fortunate upon us. He has blessed us so much every single day. Meat, chicken, fish, whatever, Allah subhanahu wa ta'ala is blessing us in abundance. And He has made us from those people to give. So ye hamari zimmedari hai, if Allah subhanahu wa ta'ala has given to you from now, not the last day, Qurbani has started on the last day. No. And this is why there are extended days on this Eid. Even on the last day, if you have more than that money present in your possession, Qurbani is wajib upon you. Prepare it from now, Abi say. If you can do more than one, some places they are doing 30, 40 pounds for a small animal in some of the African countries. If we can afford in each and every pound and penny that we donate, may Allah subhanahu wa ta'ala remove that as this time of Qurbani is coming closer, and following the sacrifice of Prophet Ibrahim alayhi salam, the reward for that animal, each and every hair on that animal, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala grants you a reward for it. And it is not a competition as such, that I have done this big animal. Even we have seen that is happening in countries. And I have seen this big animal, and I will do this big animal. That is not the purpose. The purpose is that you sacrifice that animal and the poor people can eat. Ye maqsad. The poor people, the ghuraba, can eat. And they can have their part in that Eid as well. This is the aim. So my respected elders, brothers and youngsters, make an effort. If you do not know any places that you are aware of, then you can speak to me or any of the imams or volunteers, and we can guide you accordingly. But do your dues wherever it is. Make an effort to do your Qurbani and do an extra one if possible. As you are aware, many people around the world, they are waiting for you for this time where they can eat that meat, and Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the reward. Someone asked me this question in Ispe mein Khatam Karta, I will end on this. Can we donate that money as sadaqah? No. You have been commanded to do the Qurbani, it is wajib for you to do the Qurban. And from that Qurbani, people will eat that meat, that is the best. To give that money to charity is not the time. In these days of Qurbani, that is not the preferred. The preferred is to sacrifice the animal.
The sadaqah can be given at another time, and it can be given in addition as well. But in these days, this is the preferred. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq that we fulfill this action, this great sunnah of Prophet Ibrahim alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq that we can be from those people that give in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. جزاكم الله. हमारे लाला यासीन वापस ठपने पे चटाइयाँ यानी अस्सलाम वालेकुम. You okay, nephew? I'm fine, thank you. Good. मतलब और ठीक हो? ठीक है, खैरियत है। अल्लाह का शुक्र है। मौजा हाँ जी माशाल्लाह हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम. जुम्मा मुबारक जी. और अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. फैसल तक कैसे गुजर गया? निकली गया. सर यहाँ पर मोहतरम बिस्मिल्लाह. ਗੱਲ ਸੁਧ ਰਹੀ ਹੈ यही गल है ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਮਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕੱਟਾ ਇਸੇ बिस्मिल्लाह. ओ बिस्मिल्लाह मोहम्मद सरदार. क्या हाल है? बिस्मिल्लाह. लाला को फ्रास क्या हाल है? ठीक हो? सेहत ठीक है? निकली गई. जाने दो निकल गई ना निकली धक्का लाइसेंस. अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर वापस आई गया हूँ. जुम्मा पढ़ी हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. चले हैं कार तो फिर पता करें क्या होना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाँ जी व्यूवर मैं करने गया ने नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट करने होता अच्छो आज तक भूख की जाए हलवा पूड़ी ते नाल चिकन बटर चिकन है यानी चिकन मखनी अपनी जबान नाल अंडा बनता हुआ नाश्ता करने तो अच्छो नहीं तो मैं स्टार्ट होने वाले हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. निकिया कि चाहिए था एक माड़ा पत्रिया पाकिस्तान गया सी आज मुड़ी आया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है चाचू? ठीक कैसी जागना सुता वा? सुता सही गया. ओहो मैं लेट हो गया फिर. चलो व्यूअर खाने तो अच्छो पाकिस्तानी मेवे आए हुए हैं पाकिस्तान तो यानी वाह जी वाह. कुछ बंदे खानी तो आई जो मारे घर ना छे पापे के घर छे मारे घर नहीं ने. हाँ मारे को तो मंगो तो मारे को नहीं. एक है खजूर चॉकलेट बादाम खजूर. वाह जी वाह. देख ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਕੜੀਆਂ ਚਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ. ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਵੀ ਪਾਸਾਂ ਪਰ ਚਾਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਗੁਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲੱਭੀ ਜਾਣੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਸਰ ਨੇ ਘਰ ਜਾਸਣ ਨਾਸਰ ਬਸ ਨਾਸਰ ਨੇ ਘਰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਉੱਥਾ ਸੇ ਲੱਭੀ ਫਿਰ. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦੀਠਾ. हाँ जी व्यूअर बैक गार्डन है ना व्यू आज सिंगी धुप सेड़ी हुई माशाल्लाह निकली है फिर तैयारी करने चल रहे. अज राती बारिश भी दसने पे कि 11-12 तो बाद बारिश लैसी हुई
अगला हफ्ता पूरा वैसे बारिशां ने दसने पे अल्लाह खैर करे। अरे पता नहीं क्या चीज़ मोली है। चलो इसकी भी तकने आप दीजिए। याद आई मुझे पता नहीं कसना है ना पन्यास होए। मरी गई है बेचारी। पर कितने सोने से रेड एंड ब्लैक चलेंगे अंदर। तनवीर को नहीं मुड़िया। तनवीर निकली गया कुछ ज्यादा पर को नहीं आया वापस। उन टाइम होया समीर ना समीर को ना आया। चाड़ पे गई जी। सख्त होई सर्दी होगी बल्ले बल्ले ठंड होगी चंगी भली। पापा तो किसी ने कोट लाई था क्योंकि टैंपरेचर आ गया थल्ला। हवा चुल्ले की बड़ी ठंडी ठंडी। वीकेंड तो मज़ा होना ना अग बल तो बेही रहो। मौसम ही जाया अकबाल अज बारिश वाला मौसम हो गया सही। राती दसी ने 11 बजे तो बाद बारिश शुरू हो सी ने 35% चांस है ना। सही गल ये जेले इस तरह नहीं पाकिस्तान आखने होने कि बारिश को नहीं होनी धूड़ तो मिट्टी इतना भी गड्डियां तक ने बिल्कुल इस तरह कल मैं बाणा सा धूड़ी धूड़ेगी सारा क्या पीछे बारिश बूटे सारे सुक्की गए जी। बूटे तक किस तरह गए लोटे पानी बहुत सही। सही है ना सही पाकिस्तान स्टाइल है क्या गुड कैसी कोनी फिर सुना ठीक ठाक सब खैर खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेहत पाक ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रीब रहम वैब से अंदर We did the same move United. about 50 different times. उस्ताद के लिए से गया ही Try and lock it into the box. निकली और दूर दूर निकल गया। at the moment we are असद रहने लगे इसने। Interim PSG in a few days, isn't it? मैच चंगा हो सी ना थोड़ा एक्साइटिंग हो सी तकने वाला मैच कुछ ना मैच है अगला अगला को नहीं साड़ा हुन बस फिनिश है सीजन अग्गे बड़ा मैच है यूरोपियन कप चढ़ेगा क्या लगी हुई जी ड्राफ्ट बोर्ड में तो दिस नहीं कोई फिल्म से चिट्टे में काटियां चिट्टियां नहीं पता लगना। शेयर करी गए होंगे कस्टमर शेर बनवाई उड़िया ने शादी ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਗਾਰਡ इतना बड़े बड़े शेर असन निकाई उड़े एक आ शेर है इन्ना काटियां ने शेर का असं आखा इन्ना गाड़ियां ने शेर कुदा ना अच्छो हाँ जी वीवर इधर और मेहमान हमारे लगे इसने साढ़े बड़े भतरीए कैश के मिलने वास्ते जने लगे इसने दो कब केड़े बसा गए उधर गए हुए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। चंगा नहीं लग रहा ये बुढ़िया हुए ये क्या हाल है अच्छा चंगे सा तू परदेसी क्या कम करनी है। ओ करेंदी मैं नहीं करेंदा मैं उधर ड्राइवर वेरी गुड और सुनाओ सब ख्याल खैरियत सेहत पाक और रहंदे रहंदे यार शूज कोई नहीं दो नहीं हुए एक टिका स्टैंड ते दो बोतलां टंगियां मैं एक पासे जाना ते हसन ना ये सुता वा कैस ते दूए पासे नासर दो बोतलां लगियां वा डॉक्टर साहब ने अपना भी ऐसी होना ਉਹ ਘਰ ਲਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ हाँ तमूर ਘਰ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ तमूर जिंदाबाद जी उसकी बहुत वक्त भाई रखे अफसर सारे हम बल्कि
ਇਹ ਅੱਪਾ ਲੋਕ ਫੋਨ ਹੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬਾਸ ਕੰਮੇ ਬਣਾ ਦੀ ਇੱਥਾ ਜੋ ਬਾਸ ਕੰਮੇ ਪਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੇ ਦਬਾਂ ਚ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਸਰ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਯਾਰ ਇਸकी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸकी ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਫੀ ਦਾ ਰੂਣ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਛੱਟੋ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਬੁਲਾਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਏ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਰੋਪ ਹੋਣਾ ਨਾ ਯਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਸਕਣੇ ਆ ਕਿਆ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਯਾਂ ਸੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ ਕੋਣੀ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਖਾਤਾ ਕਿਆ ਹਾਲੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਲਾ ਉਸ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਇਸकी ਦਿਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ हाँ। नो ये ठीक है। आदि सुना क्या हाल है वेरी गुड या खाली गुड वेरी गुड वाह तू रख पानी से मैं नमाज पढ़ी के ना दो बॉक्सी ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ क्या बिजनेस मैन पहले वो काम करना पापा साहब खाने खाओ ना मैं खा ही नहीं रहा और मारो जरा ना मैं एयरपोर्ट पहुंचेगा ना उसको पाकिस्तान वो बहुत चंगी है कुड़ी क्योंकि उसकी जितना मैं अक्सर ना या वाली ਬੰਦਾ ਚੜੀ ਜਾਣੀਆਂ रजवान ने बोला चल जाएगा ਆਣਾ ਲੈ ਜੀ ਬੜੀ ਨਾਲੇ ਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ मैनचेस्टर ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਤ ਰਹਿਣਾ सुनाओ सो दूर हो नेरा कुर्सी आना जी ਕੋਈ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਨਾ कुर्सी नेरा क्या कुर्सी दूर नहीं रखी ने ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਮੈਂ ਉਸकी ਸਾਈਡ ਹੱਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮਤਲਬ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿੱਕੀ ਹੋਰ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ओ हाली डरनी बहु है उसकी सब नहीं लगनी कि हाली नहीं आना मैं एक जगह खलता हो सब भावे उठा मैं ही ना हाली बात ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰੋ ਪਾਪਾ ਭਾਈ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਮਾਂ ਬਰਸਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ सह बिस्मिल्लाह थोड़ी जी प्लीज सारी रूटीन बनती सी ना ऑलरेडी जैसे हम तो सुजुकी चलाना से फिर बनाने जाए ना रूटीन बनती सी फिर तो कोई वक्त नहीं होता फैक्ट्री से जाए और अब स्टाफ नाल थोड़ा जा बंदा गड़बड़ हो सकती थोड़ी बहुती सम टाइम कि तो सुने आपने बंदे सन हाँ जी बस ये गल है फिर सही ਫੋਨ ਲੋੜੀ ਜਾਂਦਾ है मैं फोन छान गया था चार्ज लाया सी ना ਵੀਵਰ ਫਿਲਮ ਥੋੜੀ ਮਿਸ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਗੇਮ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਸੀ ਸੇ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣੇ ਸੇ ਲੈਸੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਜੇ हाँ ਵੀਵਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਗਏ 6 ਹਫਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਭ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਸੀ ਦਾ ਲੂਦਗੀ ਸੋ ਧੂੜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਮੁੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸਨੇ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਜੈਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ मैं अंदर से दिखना बैठा ठीक है अल्लाह ने वाला जाओ ਜਾਓ ਇਹ ਸਵੇਰਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਜਾਈ ਰਹੇ ਸ਼ਫੀਲਡ ਨਾ ਸ਼ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਆ ਰੈਡਫੋਰਟ ਕਿ ਰੈਡਫੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਡਨਕਾਸਟਰ ਜਾਈ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਾਰਟ ਚਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਊਗ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਡਨਕਾਸਟਰ ਤਮ 2 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣਿਆ ਫਿਰ ਅਸਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਮਝੀ ਗਣੋ ਰੱਖਣੇ ਪੈਸੇ ਚਲੋ ਯਾਸੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਕ 62
ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਸੀ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਫੀਲ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਨੇ ਥਿਆ ਸਰਾਰ ਪਾੜ ਸਕਣਾ ਚੰਗਾ ਵੇ ਜਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਮ ਟਮ ਪਰ ਲਾਈ ਖੜੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ 12:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ ਜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਤ ਪੋਲੀ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਉਲ ਡਬੀ ਆਲਾ ਜੀ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਓ वो ना हैगा सारे जुले हो आला ठीक है जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज हाँ जी वीवर मी क्यों दो इजाज़त अल्लाह सुनने वाला है कल सुबह मिलसा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जीने रहे आता है तो दवावां में याद रखा है तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखा है खुदा हाफिज सफ़ी अल्लाह हाफिज